Good morning, students. As we have already done the question number 10 of exercise 23E, today we will start with question number 11. In question number 11, it is given the legs of a right triangle are in the ratio 3:4 and its area is 1014 centimeter square. Find its hypotenuse. As I have told you yesterday, in 11th question, if this is a right angle triangle, right angle at we can take at B. ABC is a right angle triangle. In this legs of a right triangle कौन सी होती है? Perpendicular and base. This is given in the ratio. तो रेशियो आपको जो दी हुई है लेग्स की that is 3:4. तो what you will assume, let one leg which we can take it as base equals to 3x and other leg which we can take this perpendicular side as 4x, and area of right triangle is given 1014 centimeters square. Now two legs means this is 4x and this is 3x. right angle आपका कहाँ पे होता है? This is 4x and this is 3x. So area of a triangle, what is the formula? Half into base into height equals to 1014. Now half into base is this, BC is a base, that is 3x, multiply height is AB, that is 4x, is equals to 1014. So this will when you will do the cutting, this will come 6x square equals to 1014. So x square will be equals to 1014 upon 6. You can do the cutting. 6 ones are 6, 4 carry, 6 6 6 are 36. Okay, so x square, here you have cut it with 6 9s are 54. So it comes 169. So x square is equals to 169. So when you will take the square to this side, it will become root. X is equals to root 169. And 169 is the root of 13. 13 into 13 is 169. Now you got the x. So you will find the perpendicular and base. So base is equals to 3x. आपने base को माना था 3x. So 3 into 13, 39. So you got the base 39 centimeter. Similarly, perpendicular you have assumed it 4x. So 4 into 13 is 52. This has come 52 centimeter. Now we have to find this hypotenuse. ये आपने hypotenuse find करना है. As we know, this is a right angle triangle. So we will apply the Pythagoras theorem to find this hypotenuse. Pythagoras theorem is equals to h square is equals to p square plus b square. तो h square is equals to p अभी आपने find किया, that is 52 centimeter. So 52 square. b you have find it 39 centimeter. So 39 square. So what is the square of 52? 52 का square आपका क्या आएगा? 2704 plus 39 square will be equals to 1521. So h square is equals to, when you will add this, you will get 4225. तो h is equals to under root 4225. अब आपने 4225 का रूट निकालना है. सिमिलरली यू कैन टेक द फैक्टर्स निकाल के पेयर करके आपने जिसको 4225 का स्क्वायर रूट निकालना है. सो स्क्वायर रूट विल कम 65 सेंटीमीटर. तो h आपका कितना आ गया? 65 सेंटीमीटर. Now in question number 12, it is given the sides of a triangle are in the ratio 13:14:15 and its perimeter is 84. Find the area of the triangle. Now ratio of sides is given 13:14:15 and perimeter is also given, that is 84 centimeter. Now when the ratios side is given in ratio, first you will assume that first side आप assume कर लो 13x, second side 14x and third side 15x. Now perimeter equals to sum of all sides. Perimeter का मतलब होता है sum of all side. तो perimeter is already given to you, that is 84 centimeter. So आपने क्या करना है? A plus B plus C
is equals to 84 centimeter. Now you will add it. What you will get? 2, 1, 2, 3 and 4. 42x equals to 84. So x is equals to 84 upon 42, that is 2. तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई? 2. तो आपकी जो साइड्स हो जाएंगी वो क्या होंगी? a इज इक्वल्स टू 13x, तो 13 इंटू 2 दैट इज 26 सेंटीमीटर. b इज इक्वल्स टू 14x, तो 14 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. एंड c इज इक्वल्स टू 15x, तो 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. सो यू गॉट द साइड a, b एंड c. a, b और c आपकी साइड आ गई एंड दीज साइड्स आर डिफरेंट. तो आपने अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग हैं. सो यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, अप्लाई द हेरॉन्स फॉर्मूला एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. मैंने आपको ये बता दिया कि साइड्स कैसे निकलनी है. रेशियो से साइड्स आपने निकाल के नाउ यू विल अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला. डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. Now 13 question you will try it yourself. 13th one. 14 I will tell you. In question number 14 it is given the cost of painting a top of a surface of triangular board is 80 paisa per square meter is rupees 176.40. Now in question number 14 what is given to you? First of all rate is given. Rate of painting. रेट ऑफ पेंटिंग का ट्राइंगुलर बोर्ड. ट्राइंगुलर बोर्ड है, शेप कौन सी इसकी? ट्राइंगुलर बोर्ड. और उसका आपको रेट गिवन है 80 पैसे पर मीटर स्क्वायर. एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो गिवन, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 176.40. Now rate is also given and cost is also given. Rate is given in meter square. तो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा? एरिया. So what will be the area of triangular board? That will be equals to cost upon rate. Now cost is 176.40 and rate is 80 पैसे. तो रुपीस में ये कितने हो गए? 0.80. तो आपके ये क्या आएगा? 0.80. 2 डेसिमल्स हैं तो डेसिमल्स तो आपके कट हो गए. 0 and 0 इज कट. नाउ यू हैव टू डू दिस कटिंग एंड यू विल फाइंड द एरिया. सो आफ्टर कटिंग यू विल गेट 220.5 मीटर स्क्वायर. एरिया आपका आ जाएगा 1764 को आपने 8 से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट द एरिया. नाउ एरिया यू हैव गॉट इट. एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड आपको आ गया. अब आपको और क्या चीज यहाँ पे गिवन है? If the height of the board is 24.5, height is given to you. Height is given 24.5 and you have to find the base. Base आपने base you have to find it. तो area of triangle formula is half into base into height equals to 220.5. तो half into base आपने find करना है. height आपको given है 24.5. equals to 220.5. तो base will be equals to 220.5 into 2 upon 24.5. जब आपने ये चीजें उधर लेके जाओगे this will be reciprocal. Now you have to find the base. Decimal तो आपका कट हो गया. Do the cutting. So when you will do the cutting, decimal and decimal is cut. When you will do the cutting, you will get 18 meters. 18 meter. Okay, after cutting you will get 18 meter. So for today you will complete question number 11 to 14 in your notebooks and please show the calculation on the right side of your notebook. एक कॉलम रफ का बनाकर उसमें रफ नोटबुक पे आपने कैलकुलेशन शो करनी है. Okay, so complete it till here. Thank you.